So while loop is generally used when the termination condition is unknown. It means not fixed actually. Not unknown, not fixed. So that is same as for loop. Okay. So like I equal to 1 is your loop counter. Okay. The next is the while. I less than 10 suppose. So what it means? Let's say termination condition. Okay, loop termination. The next one is statement or the loop body. Okay, the loop body you can write print I. Okay, the next is increment or decrement. The three things are required in a while loop. Okay, loop counter, termination conditions, and counter. Increment or decrement. Okay. So we will decide the counter will increase or decrease as per the conditions. Okay. As per the condition, we will increase or decrease. So at the basic, and then we can write print by. Okay. So what will be the output? Srinivas, what will be the output? Sneha? Sneha? आउटपुट क्या होगा? Yes, sir. स्वयं मानो सर बाय प्रिंट होकर आएगा. ओनली बाय प्रिंट होगा. क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? So it will print I equal to 1 condition. Okay, print I. So here is a loop. Okay, ये क्या है? आपका loop है. So now listen. Starting. Okay, I equal to 1. Now it will check, test the condition. Okay, it will come here. It will test the conditions. Yes. So now what is the condition? Sneha, condition क्या है? तुम मानो, what is the condition? Condition. Sneha. Srinivas. आवाज आ रही है क्या? Okay. So the condition is I less than 10. Initial value I equal to 1. The condition is I less than 10. Okay, so the loop will run up to till I less than 10. Okay, so initially I 1 less than 10 condition true, it will enter into the loop body. So inside the loop body only there are two statements. Okay, ये two statements है. लूप के अंदर कितने स्टेटमेंट है? ओनली टू स्टेटमेंट्स. कैसे पता चलेगा? बिकॉज यहाँ पर ये स्पेस है.
ओके, इससे पता चलेगा कि लूप बॉडी के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं। ओके, सो यहां से यहां पर आएगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल एंटर इनटू द लूप बॉडी। Okay, so after finish the loop body, after finish the last statement, it will again test the condition. यहाँ पर condition test होगी। If the condition true, then it will continue. Okay, I equal to I plus 1, and then again it will test the condition. So ये condition continue test होती रहेगी। So the loop will run like this. Initially I equal to 1, your starting point. Okay, so it's your 1, it's your 2, then on the initial condition with 3, and then it will come to 4. Okay, so it will run 1, 2, 3, 4, and then continue again. Okay, so here is your loop. I equal to 1, I less than 10, print I. So initially it will print I1, then I becomes I equal to I plus 1. Okay, now I2. So now 2 will be test, 2 less than 10, condition true. Then again it will print 2, I equal to I plus 1. Okay, so I 3. So 3 less than 10, condition true. Then again it will print I, then I plus 1. Okay, so by statement का print होगा after the completion of the loop. Okay, जैसे ही यहाँ पर end होगा, suppose the condition false. Okay, यहाँ पर condition suppose ये false हो जाती, then it will come to this statement. ये किस case में? In case of false. Suppose ये condition false होता है, then it will come to the out of the loop, and out of the loop we have only one statement, that is a print. So it will print after completion of the loop. Okay, so it will run like this. Now you can see the output. Okay, so 1 2 3 4 5 9 and the last में 1. Okay, ये clear है? So we can use the same thing. Suppose we have one loop for I in range, like suppose write a program to find sum of numbers, ठीक है, input by user to find sum of numbers for users. Display sum of all numbers and G. Okay. Now, can you read the program? Sembano. Sembano. Yes, sir. Can you read the program? Write a program to find sum of numbers input by users and display sum of all numbers when user input is 0. इसका क्या मीनिंग है श्रीनिवास? श्रीनिवास अवेलेबल हो क्या? स्नेहा, यस सर। इसका क्या मीनिंग है? अनुजा, ओके,
सो हमें क्या करना है, sum of numbers and the numbers are input by the user. Okay, so just say suppose number 1, 2, 5, 8, randomly the user can input a number, but we have to display the sum of all numbers when the user input. Okay, so this is number, suppose the user 0 input करता है, then we have to the loop, we will display the sum. Okay, so how? So initially we take variable sum equal to 0, or we can use s equal to 0. Okay, now we run the loop. Okay, so we need one infinite. What we need? We need one loop infinitely while true. So while true, it means it's infinite loop. It will never terminate. Okay, so we terminate the loop when the user input 0. So while true, it means it's infinite loop. If we run this program, then it goes up to infinite. Okay, never terminating loop, infinite loop. So while true, now inside the true loop, we take a number. Okay, input, enter a number. Okay, now we have to test this number, that this number is 0 or non-zero. Non-zero. If n equal to 0, then what we will do? We will break this loop. Okay, क्या करेंगे? Break कर देंगे. So break क्या है? Break it means it will end the loop. If n equal to 0, then we will break. Otherwise, what we will do? It will do s equal to s plus b. Okay, that will continue. Out of the loop, we will display sum of numbers equal to. ठीक है? So if we run this program, enter a number. So suppose we enter here 2, 8. So we will continue enter the number. Now it will display. जैसे हमने 0 enter किया, it will display this. इसमें डाउट है? क्या मानो? नो सर. So break पता है क्या करते हैं? सर लूप को एंड करता है. लूप को एंड कर देगा. ठीक है, so it will end the loop forcefully. So if n equal to 0, it will break. It will end the loop. If suppose n not equal to 0, then it will not enter to the break if condition. Okay, ये क्या करेगा? s equal to s plus n. So now this statement, ये जो break statement है, ये किसके अंदर है? इस if के अंदर. ओके, और ये जो स्टेटमेंट है, ये इसके बाहर है. बाहर है इन द सेंस, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल ऑलवेज रन. ये हमेशा रन होगा. ठीक है, सो इन बिटवीन दिस हमने क्या कर दिया? कंडीशन पुट कर दिया. ये n इक्वल टू 0, देन लूप को ब्रेक कर दो, अदरवाइज उसको ऐड कर लो. ठीक है, तो या तो ब्रेक करना है या तो ऐड करना है. तो यदि ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पर ऐड होगा. सिंपल सी बात है. और इस लूप के बाद हमने क्या कर दिया? इसको प्रिंट कर लिया, इसको समझो. ठीक है, ये प्रोग्राम नोट कर लो आप लोग. ओके, ये ठीक है. ओके, द नेक्स्ट थिंग. सो इस टाइप का प्रोग्राम एग्जाम में आता है ऑन द वाइल लूप. नाउ वी विल सी द जंप स्टेटमेंट्स. ओके, इसी को हम लोग देखते हैं बाद में.
statements. So there are two jump statements. One is the break. Second one is continue. Okay. So what is the break? Break into it terminates the loop. ठीक है, तो लूप को टर्मिनेट करता है। ब्रेक क्या करता है? लूप को एंड करता है, टर्मिनेट करता है। ओके, एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू नेक्स्ट है। ओके, फिर कंटिन्यू द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द लूप। इसका मतलब है ब्रेक इट मीन्स सिंपल सा, जहाँ भी ब्रेक होगा वहाँ पर लूप एंड हो जाएगा। कंटिन्यू द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द लूप, तो इट कंटिन्यू द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द लूप। इसका मीनिंग है सपोज वी हैव वन लूप, सपोज हमारे पास वाइल है। वी हैव वन लूप वाइल वाइल i less than equal to 20। ओके, एंड देन वी हैव सपोज यहाँ पर 1 2 3 10 स्टेप। ओके, देन वी हैव यहाँ पर i equal to 1। ओके, सो द लूप विल रन। कैसे रन होगा? यहाँ पर 1 होगा स्टार्टिंग, इट विल चेक द कंडीशन, कंडीशन टेस्ट होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू then it will enter into the loop. Now from the last statement it will continue the next cycle। नेक्स्ट साइकिल लूप का क्या यहाँ से कंटिन्यू होगा? फ्रॉम द लास्ट स्टेटमेंट, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट। ओके, ये क्लियर है? नॉर्मली कहाँ से होता है? तो ये नॉर्मल कंडीशन मैंने बताया। इट विल स्टार्ट फ्रॉम i equal to 1। नाउ कंडीशन विल बी टेस्ट। ओके, कंडीशन टेस्ट होगी, सपोज कंडीशन ट्रू, देन इट विल इनटू द लूप बॉडी, then it will execute all the statements of the loop। From the last statement it will continue the next cycle। okay, it is normal condition। ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, लूप के लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में नेक्स्ट साइकिल आपको कंटिन्यू होगा। ओके, तो नाउ i इक्वल टू 1 था, अब यहाँ पर i क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। डिपेंड करता है 2 3 4 आपको क्या करना है। ओके, फिर यहाँ से 2 लिखी जाएगी, फिर i क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर i होगा 4। ओके, कंटिन्यू अप टू 19 तक, और फिर 20 तक चलेगा। ओके, फिर लास्ट साइकिल यहाँ से कंटिन्यू। बट सपोज यदि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है कि मुझे इन बिटवीन कहीं से यहाँ से मुझे कंटिन्यू करना है साइकिल, समझ आ रहा है? मुझे क्या करना है? कहाँ से कंटिन्यू करना है? फोर्सफुली। सपोज आई वांट टू फोर्सफुली कंटिन्यू फ्रॉम द इन बिटवीन ऑफ द स्टेटमेंट। मुझे लास्ट स्टेटमेंट तक नहीं जाना है, मुझे यहीं से कंटिन्यू कर देना है। तो देयर इज ऑप्शन दैट वी यूज कंटिन्यू। ओके, तो कंटिन्यू इज यूज टू कंटिन्यू द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द लूप। तो यहीं से नेक्स्ट साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द लास्ट स्टेटमेंट। बट सपोज मुझे लास्ट स्टेटमेंट तक नहीं जाना है, इन बिटवीन किसी स्टेटमेंट किसी कंडीशंस पर लूप को कंटिन्यू करना है, तो यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्लियर है? कंटिन्यू क्या करेगा? फोर्सफुली लूप का नेक्स्ट साइकिल आपका रन करेगा। ठीक है, तो विल सी द एग्जांपल। सपोज not in the while loop, we can use in the for loop also। so for I equal to 1, while I less than 10। okay, so I less than 10 we can say, suppose यहाँ पर मैंने लिखा that print I। okay, then if I use if equal to for 5, what it will do? It will continue।
Okay, so now equal to 8 plus 10. Hmm? So, then, कैसे देखते हैं? एक ही स्टेटमेंट चलो इसको फॉर लूप से देखते हैं और आई मीन 1 to 3. Okay, so if you write print, sorry, print I, if I equal to 5 into continue. ठीक है, so इसको मैंने लिखा इसकी ठीक है, मुझे बताओ क्या आउटपुट बताएगा, क्या होगा? आउटपुट बताएगा कोई? So it will start I will take the initial value 1. Okay, then it will test the condition. It should be less than. If the condition true, then it will enter into the loop logic. Okay, the same. So initially I 1 less than 10, condition true. Then if I equal to 5, then continue. Otherwise it will print I. Okay, so it will print I1 print 1. Then from this it will continue. Okay, because it's a normal situation. So now I2, so 2 less than 10, condition true. Again I not equal to 5, then it will print 2. 2 print होगा, then it will continue. Next 3 less than 10, condition true. Now I not equal to 5, then it will print I. तो 3 print होगा, 4 print होगा. When I5, यहाँ से जब ये 5 लेके जाएगा, 5 frequency condition true. Now I equal to 5, then it will continue. It will continue from here. ये प्रिंट स्टेटमेंट पर नहीं जाएगा. ठीक है, सो लास्ट स्टेटमेंट पर नहीं जाते हुए कहाँ से कंटिन्यू हो गया? जहाँ पर कंटिन्यू लिखा वहीं से कंटिन्यू. तो इट विल नॉट प्रिंट 5. ओके, नाउ आई की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई. सो नाउ आई नॉट इक्वल टू 5. ठीक है, देन इट विल प्रिंट आई, देन 6 प्रिंट करेगा. सो इट विल एक्सेप्ट 5, ऑल वैल्यूज विल बी प्रिंट. ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुआ, 6 7 8 एंड 9. ये क्लियर है? 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं होगा, 6 7 8 9. सो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कहाँ से? आई इक्वल टू 5 से ये क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया, यहाँ पर गए ही नहीं. नॉर्मली क्या होता है, सपोज ये कंडीशन हमने हटा दिया, so it will print and then continue, print and continue, print and continue, print and continue. ठीक है, बट इसके पहले हमने कंडीशन पुट कर दी. तो अब ये कंटिन्यू कहाँ से हो जाएगा? इस कंटिन्यू स्टेटमेंट से ही कंटिन्यू हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल. ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट पर जाएगा ही नहीं. ठीक है, सो इट्स लाइक ए कंडीशन. सपोज हमारे पास यहाँ पर ये क्लियर है क्या? इसमें डाउट है? No, sir. श्रीनिवास, इसमें डाउट है? नहीं. स्नेहा, Yes, sir. डाउट है? No, sir. अनुजा, अनुजा,
डाउट है? नो सर। तो अगेन ये किस टाइप से है? लाइक सपोज हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, ओके, लाइक एट द रेट, एट द रेट, और वी हैव एस, ठीक है, रैंडमली, डॉलर, परसेंटेज, स्टार, then again suppose minus, हाँ, as, ओके। नाउ कंडीशन है, सपोज यहाँ पर कोई पर्सन है, उसको एक टास्क दिया हुआ है, ठीक है, टास्क दिया है कि जैसे माइनस उसको कहीं मिलता है देन इट विल रिटर्न। तो क्या करेगा, इट विल सर्च सारे सिंबल्स को, जैसे इसको माइनस मिला देन इट विल रिटर्न, अदरवाइज इट विल रिटर्न फ्रॉम द लास्ट। सपोज कि यहाँ पर माइनस नहीं होता तो कहाँ पर जाता, लास्ट में जाता, एंड देन लास्ट में भी सपोज माइनस नहीं होता देन इट विल रिटर्न। सपोज यहाँ पर माइनस नहीं है, सो नाउ द पर्सन विल रिटर्न, कहाँ से रिटर्न करेगा, फ्रॉम द लास्ट, ओके। किस केस में, सपोज यदि माइनस अवेलेबल ही नहीं हुआ इन द होल लिस्ट, सपोज देयर इज नो माइनस, देन इट विल गो अप टू एंड एंड देन फ्रॉम द एंड इट विल रिटर्न, ओके। तो इसको क्या सर्च करना है, माइनस सर्च करना है, और जहां भी इसको माइनस मिल जाए वहां से रिटर्न हो जाना है। सो इट्स अ कंडीशन, ओके। सो ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड गो अप टू एंड, नॉर्मल सिचुएशन। सो एंड तक कब तक जाएगा, इन विच सिचुएशन इट विल गो अप टू एंड, व्हेन द माइनस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। यदि माइनस उसको कहीं भी नहीं मिला तो ये कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा। तो इन बिटवीन, सो नाउ in between suppose minus available है, then it will return from the minus, so in the same case, तो अभी ये end तक नहीं जाएगा, कहाँ तक चला गया, only minus तक गया। so same situation यहाँ पर है, जैसे इसको i equal to 5 मिला, so now 5 is like minus, तो जैसे इसको i equal to 5 मिला, it will continue, so continue the next cycle, यहीं से रिटर्न हो गया, ठीक है। so it will not go up to end, end में क्या है, print है, लेकिन प्रिंट होगा ही नहीं, तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज प्रिंट तो गया ही नहीं, ओके। और प्रिंट स्टेटमेंट आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्रिंट है, प्रिंट आई, ओके। लेकिन इसने कहाँ से रिटर्न कर दिया, यहीं से रिटर्न कर लिया, तो यहाँ तक पहुँचे, ये इसका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन में 6 होगा, तो 6 एंड तक जाएगा और प्रिंट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो ब्रेक अभी हमने देखा था, एंड कंटिन्यू। सो these two programs, jump statements, break and continue, okay। so कल हम लोग देखेंगे on list, कल हम लोग को लिस्ट है, ठीक है, ओके। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ओके, चलो बाय। यस सर। Thank you, sir.